Hello guys, welcome back to Math Station. And today I'm going to make a playlist for FY BCom class, first year in BCom class from Mumbai University. So, I will do maths and state portion. So, today I'm going to start with shares and mutual fund, which is the first topic of maths portion. Okay. So, my name is Ranjit Singh and I am assistant professor of mathematics. So, without wasting any time, let's start the topic shares. Okay, fine. So, what is shares? So, here are some notes by me. You can read that. So, shares is nothing but suppose I have a company and I don't have money to run it, or I don't have money to establish it. Okay, so what will I do? I will create a paper. Suppose I have created a paper of 10 rupees, which is called share. And this 10 rupees is what? Face value of share. Okay, so I will sell this paper. Suppose I want to raise a capital of 1 lakh rupees. Okay, or simply say I have to raise a capital of 10,000 rupees. Okay, to run this company. So what will I do? I will distribute this 10 rupees shares to 1,000 people. Okay, I will distribute this 10 rupees shares to this 1,000 people, and I will ask them to buy my shares. And by this process I will raise this 10,000 rupees. But what I'm uh, doing is this, when I'm distributing this 10 rupees share, okay, when I'm selling this 10 rupees share, I am also selling my ownership, 10 rupees ownership of the firm, to my shareholders. So that is nothing but shares. Okay, so when a group of person plan to establish a company, they form a company under the Companies Act 1956. Now this company is an established company. The people who establish this company are called promoters of the company. This promoter can now raise a certain amount of capital to start or run the company. They divide this required amount into small parts called shares. The shares is the smallest unit of capital of a company. Stock is the American term for share. Usually, a share is of value rupees 100 or rupees 50 or rupees 10, rupees 5, rupees 2, rupees 1, anything. So, this is what face value of the share. Okay. This value is called the face value of share. These shares are sold to the public. Usually face value is rupees 10 unless otherwise specified. This sale is called the initial public offer of the company. Now see what happen is, suppose मैंने ये शेयर लिया, आ, आ, मैंने ये शेयर इशू किया 10 रुपीज़ का. ओके, बट मार्केट में मेरा कंपनी बहुत फेमस है, लाइक बहुत फेमस है. एंड when I will sell this share in the market for the first time, the process is called initial public offer. Okay, and since my company is very famous, then of course सब लोग वहाँ पे बाय करेंगे शेयर्स को. ओके, तो जब ज़्यादा लोग बाय करेंगे तो मेरे शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा, और मेरे शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा तो मेरा जो शेयर 10 रुपये में बिक रहा था वो कहीं 100 रुपये में बिकना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. फाइन. सो as you can see, market price of share is greater than the face value of shares. Similarly, अगर मेरा कंपनी की कहीं, मतलब मेरा कंपनी कहीं कुछ पता ही नहीं रहेगा मेरे कंपनी का, सब लोग बोल रहेंगे कि मेरा कंपनी बहुत ही ख़राब है. ओके, या उसका लीडरशिप ख़राब है, सीईओ ख़राब है, या बैलेंस शीट ख़राब है. तो क्या होगा कि जो मेरा जो शेयर 10 रुपये का था कोई खरीदेगा नहीं, तो मुझे उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो कम आके कहीं 6 रुपीज़ में बिकना स्टार्ट हो सकता है. ओके, so it's all depend on the nature of demand and supply. Fine, so let's move on. So what is shareholder?
Any person who owns at least one share of a company stock is called shareholder or stockholder. What are the type of shares? Mainly the shares are of two types: preference shares and equity shares, or common shares or ordinary shares. Okay, so what is preference share? So these shares have a priority over the equity shares. From the profits made by a company, a dividend at a fixed rate is paid to them first before distributing any profit amount to the equity shareholders. Okay. Also, if and when the company is closed down, then while returning of the capital, the shareholder get a preference. Again, preference shares are mainly of two types: cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. Fine. So suppose uh, I own a shares of Kotak Mahindra Bank. Okay. And I have shares of equity shares or ordinary shares and preference share. Fine. I have one equity shares and I have one preference share. The share has a face value of 100 rupees. This shares has also a face value of 100 rupees. Okay, fine. Now, what they are saying that whenever the Kotak company gains a profit, suppose Kotak company को 1000 रुपया profit हुआ. Okay, so 1000 रुपया profit हुआ and suppose they declared that कि भाई मैं शेयर्स को मतलब मैं डिविडेंड भेजूंगा. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिविडेंड एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. So suppose they said that I will declare a dividend. So whenever they are declaring dividend, suppose they have 1000 rupees. So first of all, they will pay to preference shareholder. Okay. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को पहले डिविडेंड दिया जाएगा. अगर सपोज वैसे डिक्लेयर जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के परसेंटेज पे डिक्लेयर होता है. सपोज मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज़ है and they declare that we will give dividend 1%. So 1% of face value, that is 1% of 100 rupees, that is 1 rupees. Okay. तो अगर ये लोग को 1000 रुपये प्रॉफिट होता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देंगे. उसके बाद अगर पैसा बचता है तो ये लोग अपने इक्विटी शेयर्स लोग को डिविडेंड बांटेंगे. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. अब प्रेफरेंस शेयर्स में भी दो टाइप के शेयर्स होते हैं: क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि सपोज जैसे 2019 में, 2020 एंड 2021. तो 2019 में कोरोना आया, करेक्ट. तो सब कंपनी की बैंड बजी, तो सब कंपनी ऑफ कोर्स लॉस में चलेगी मोस्टली. जस्ट इमेजिन कि सब कंपनी लॉस में चलेगी. So of course in 2019 they cannot declare a dividend because they are in loss. Okay, so 2019 में कोई डिविडेंड नहीं मिला. अब 2020 में भी कोई डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि दे आर इन लॉस. नाउ 2021 में ये लोग बहुत प्रॉफिट में हो गए और ये लोग ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. तो अब सीन क्या होगा कि जिसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा वो लोग को 2019 का भी डिविडेंड मिलेगा, 2020 का भी डिविडेंड मिलेगा और 2021 का भी डिविडेंड मिलेगा. ओके. तो जो तीनों ईयर का, ये जो दोनों ईयर का शेयर, जो दोनों ईयर का डिविडेंड नहीं मिला था वो एक्यूमुलेट होता रहेगा. तो जो थर्ड ईयर 2021 में ये तीनों ईयर का डिविडेंड ऐड होके मिलेगा ये लोग को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को. और जिसके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होगा ये वाला, तो वो लोग को सिर्फ 2021 का डिविडेंड मिलेगा. ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. फाइन, ठीक है. इक्विटी शेयर्स क्या होता है? These are the shares for whom the dividend and the return of capital is paid after paying the preference shareholders. In case of equity shares, the rate of dividend is not fixed and it is decided by the board of directors. अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, बट इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है. ओके, फाइन. डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? A share is a part of the company when the company makes profit
you often receive a part of it. This is the primary source of income. Dividend depends on the profit made by a company. Dividend is declared by the company on the face value of share. तो ये सबसे important बात है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर डिक्लेयर होता है. डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूशन. सो अगर सपोज मेरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज़ है. ओके, 100 रुपीज़ मेरा फेस वैल्यू मीन्स वॉट, जो शेयर के ऊपर प्रिंटेड प्राइस रहता है. ओके, तो ये क्या है, मेरा फेस वैल्यू है. और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मेरा जो डिविडेंड मिलेगा वो 2% मिलेगा. तो व्हाट विल बी द डिविडेंड अमाउंट? तो डिविडेंड अमाउंट विल बी 100 का 2%, विच मीन्स 2 रुपीज़. ओके, फाइन. तो ये तो हो गया डिविडेंड. नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बोनस शेयर्स. So bonus shares are additional shares given to the shareholder without any additional cost based on the number of shares that a shareholders own. Normally bonus shares are declared in the ratio. तो जब कभी ये लोग के पास रिजर्व फंड रहता है तो ये लोग बोनस शेयर बांट देते हैं. इससे ये लोग का वेल्थ कैपिटल नहीं बढ़ता, वेल्थ सेम ही रहता है. फाइन. नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ ब्रोकरेज. व्हाट इज ब्रोकरेज? ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज्ड बाय द ब्रोकर for buying and selling of shares from buyers or sellers. So if you are buying shares, brokerage is added to the market price, and if you selling shares, brokerage is subtracted from the market value. तो होता क्या एक्चुअली कि सपोज अभी मेरा ये कंपनी है, ठीक है. अब मेरे पास फंड नहीं था तो मैंने शेयर कैपिटल रेज करने के लिए मैंने शेयर इशू किया. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मैं शेयर इशू किया तो ये प्राइमरी मार्केट होता है. तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ओके, तो इन प्राइमरी मार्केट जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, तो मैंने शेयर इशू किया. मेरा 10 रुपीज़ का शेयर था और सिंस मेरा कंपनी बहुत फेमस था तो ये शेयर एक्चुअली बिकने लगा 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ पर शेयर. तो दिस बिकम मार्केट प्राइस. ओके, दिस बिकम फेस वैल्यू. नाउ अब सिंस अब ये जो मेरा शेयर्स है वो शेयर होल्डर लोग के पास में आ गया. ओके, तो सपोज कोई बंदा है रमेश, अभी उसने मेरा शेयर्स बाई कर लिया. ओके, 100 रुपीज़ का शेयर, 2 शेयर्स उसने बाई किया. इसके पास 2 शेयर है. तो अभी क्या होगा, रमेश के पास सपोज कोई मतलब कुछ नीड आ गया पैसे का, तो ये क्या करेगा, ये शेयर्स बेच देगा मार्केट में. अब जहाँ पे ये शेयर्स बिकने लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट. तो आपने एक बार शेयर खरीद लिया तो आप कभी भी इसको खरीद और बेच सकते हो. तो सपोज रमेश ने अभी शेयर बेच दिया, करेक्ट, तो उसके पास इनकम आएगा. लेकिन एक बार शेयर्स खरीदने के बाद हम लोग कहाँ बेचते हैं, हम लोग किसके थ्रू बेचते हैं? जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ कंपनी है. ठीक? ये कोटक सिक्योरिटीज़ कंपनी है. अब मैं गया ये लोग के ऑफिस में, मैंने बोला, रमेश गया ये लोग के ऑफिस में और रमेश ने बोला कि भाई मेरे पास 100 रुपीज़ का एक शेयर है और मैं आप बेचना चाहता हूँ. तो कोटक सिक्योरिटी बोलेगी कि ठीक है भाई, आज मार्केट प्राइस मेरा 100 रुपीज़ है और मेरा ब्रोकरेज चार्ज जो है वो 0.1% है, और 1% सिंपली फॉर कैलकुलेशन. ओके, तो कोटक सिक्योरिटीज रमेश को बोलेगी कि आज मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है और जो ब्रोकरेज चार्ज है मेरा वो 1% है. ऑफकोर्स कोटक सिक्योरिटी बेच रही है इनका शेयर तो फ्री में नहीं बेचेंगे, कुछ चार्जेस लेंगे क्योंकि वो लोग को भी पेमेंट करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ को. ओके, सो अब जब रमेश 100 रुपीज़ का शेयर बेचेगा जो कि मार्केट प्राइस है, करेक्ट, तो ब्रोकरेज क्या है 1% और ये सेल कर रहा है, करेक्ट. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर will become what? Market price minus ब्रोकरेज चार्ज. अब एक बात याद रखो कि जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे बेस्ड होता है. ओके, तो ब्रोकरेज चार्ज इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस.
So suppose my market price is what 100 rupees and my brokerage charge is what 1%. 1% of what? Market price. So 1% of market price is what 100 rupees. So this is 100 minus 1% of 100, 1 rupees. So this is nothing but 99 rupees. Okay. So when Ramesh went to sell his shares of 100 rupees to the Kotak Security told him that my brokerage charge is 1%. And after selling the shares, Ramesh got only 99 rupees while he was having the shares of 100 rupees. So did you understood? When we are selling, we have to subtract the brokerage charge. Okay. Similarly, suppose कोई एक बंदा है नवीन. Okay. He want to buy these shares. Now Naveen goes to the Kotak Security and he told them that I want the shares of this person company, like Ranjit company. So Kotak Security will tell him that okay, today market price is what 100 rupees and my brokerage charge is what 1%. So again, what Naveen has to pay for the shares? So the purchase price of share will become market price plus brokerage charge. So market price is what 100 plus brokerage charge 1% of market price. Remember this always. Brokerage charge is always percentage of market price. Dividend is always percentage of face value of shares. Okay. So 100 plus 1% of 100, which is equal to 100 plus 1, which is equal to 101. So when Naveen goes to the Kotak Security, he asked for the shares of Ranjit. Kotak Security told that the market price is 100 rupees, but Naveen has to pay 101 rupees. Why? Because he has to pay brokerage charge also to the Kotak Security. So remember these two example. While purchasing a share, you have to you have to add brokerage charge to the market price of shares, and while selling the shares, you have to subtract brokerage charge from the market price of a share. Okay, so this is the concept. Now to solve all the problems, since I am focusing on the syllabus of Mumbai University only, so that's how I created these slides. Okay, fine. So these are the formula we will use for uh, to understand how to solve the problems. And for this, I have referred the Himalaya publication book. I have referred many books, especially Himalaya publication books. So thanks to them. Fine. So these are the formulas. So first, second, third, fourth, fifth, sixth. If you remember the sixth formula, you can solve any question given by the share chapter. Okay. So there are six formula, and we will solve problem on each formula. Okay. So the first formula is what number of shares purchased, which is equal to total amount invested by a market price of a share. Total dividend is equal to what rate of dividend multiplied by face value multiplied by number of shares by 100. Okay. Now see here, total dividend is what rate of dividend multiplied by face value multiplied by number of shares by 100. So if I will say that the shares has a 5% dividend rate, then at the place of rate of dividend you have to put 5, not like many of you will confuse here that okay, I can write this formula, this whole formula is like also this. Okay, rate of dividend into face value into number of shares. Okay, now when I say 5%, then 5% means 5 by 100. Okay, because rate is always in percentage, and here in the formula already 100 is mentioned. Okay, so you have to just put the value of whatever the rate is, you have to just put the value here. You do not have to put 100 again. Okay,
So don't confuse with this percentage sign, because whenever we are talking about rate is always in percentage, right? Like I have said 5%, then 5% means what? 5 by 100. But in the formula already rate is mentioned, that is 100 is mentioned. So you have to put only number. We will see by example, don't worry. Percentage gain is what? Net gain by amount invested multiplied by 100. Net gain is what? Total sell plus total dividend minus total investment, or net gain is equal to total sell minus total purchase. So when there will be dividend declared, net gain will be this one, and when there is no dividend, net gain will be this one. Rate of return is equal to dividend received per share divided by investment in one share multiplied by 100, and number of shares sold is equal to what? Total amount invested by selling price of shares. Okay, number of shares purchased is what? Total amount invested by market price of a share, and number of shares sold is total amount invested by selling price of a share. So here we will write purchase price also, because when there is a brokerage involved, market price, purchase price. In the place of market price, there will be purchase price. Okay, we will see each question and we will do it. Don't worry. So we will solve this all this question in the next lecture. Thank you very much.